Okay, good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? Good morning, am I audible? Okay. So today there is a little bit change in class. I will be taking right now and Sujit sir will take the evening class. So sir has some basic work to, for that reason we have exchanged the time. So as for the syllabus, we'll have to move to the second unit. And today we will try to complete the half portion of the second unit. And as for our last discussion, I told you that I will go along with some of the question and answer. So if we will try to understand what is second unit. Second unit will cover these particular portions that we have to understand what is the market. Then what is the market? It is already being over. That's why I'm not focusing to that point. My focus part for this particular unit is segmentation. Then there is and try to understand marketing means there are some concepts, so that you have to understood what are the basic concepts. So concepts mein kya aaya? First it was STP concept that was came along with the segmentation. Then we need to understood MIS concept that was called management information system concept. Then we'll try to understood MR concept that was called marketing research concept. Then we'll try to understood what is consumer behavior. It is also a concept where we need to understood the different behavior of the consumers. And the last one is demand forecasting. This is what the focus point of the unit 2. Some of the expected questions from unit 2 are like this: define the STP approach, discuss the different basis of segmentation. Then second one, marketing information system is an essential tool to enhance the productivity and profit. Need to justify this statement. Third one is describe the different stages of marketing research process, because while we're talking about marketing research, the main challenge to understand marketing research is that the steps through which marketing research being covered. And one more question may be expected, that is write a short note on consumer behavior. So these are expected questions. In the last class, some of you are asking, Madam, please mention whether it is came for 12 marks or it is came for 5 marks or 8 marks. Let me tell you whether it is came for 12 marks or may be 8 marks or 5 marks. It is basically based on the question maker, how he or she will ask the question to all of you. And you are a management student. If the STP approach came in 8 marks, you have to control your words in 800 words. You have to control your description within 800 words, where you try to write everything about STP approach, but you have to make it within 800 marks. If the STP approach mein ye aaya ki 5 marks ke liye aaya, only it is written that discuss STP approach, then you have to limit your words, you limit your answer within 500 words. Same question, if it is expected in the 12 marks, then you have to elaborate what is segmentation, what is targeting, what is positioning. Then you have to elaborate this basis of segmentation, basis of, what is how to position the products in the market and all. So it is basically, it is the duty of you all how to manage the words. So where descriptions is according to the marks. So if it is 12 marks, description is all about 100,000 to 1200 words. If the question will ask for the 8 marks, then you have to synchronize your limitation of words within 800 words. Then if it is 5 marks wala question, then you have to synchronize your words, synchronize your answer within 500 words. So it is duty of yours. Try to understand that. This is the major question that expected in the last, it was asked by someone in the last class, even in when I was there in Sulochana Madam class in HRM, the same question you are asking to Sulochana Madam, that how to write. It is the art of management student, might be. So I guess. So ye to, it has to be, it has to be strategically managed by you.
So why I said this, because STP approach can be came in 12 marks question. It is also can expected for 8 marks question, and it is also being expected for 5 marks question. Fine, where consumer behavior not expected in 12 marks question, maybe it is 8 or 5 marks question. बट मार्केटिंग रिसर्च ले लीजिए या तो फिर एसटीपी अप्रोच ले लीजिए, ये 12 मार्क के लिए भी आएगा, 8 मार्क के लिए भी आएगा. इट इज अप टू यू हाउ टू मैनेज योर आंसर्स within the prescribed word limit. Got it? This is the 4 expected question from the unit 2. Let's begin with one by one. Now, what is STP? While we're talking about, try to understand the gist of this. While we're talking about a particular, particular concept of segmentation. Now, what is segmentation and why it is very much required? Segmentation means while we will produce a product, we saw there is a very large group of audience, very large group of audience whom to you try to, try to give expression of your product. That means it is a very huge population. एक बड़ा सा population है for whom you are preparing product. It's Priya, it's unit 2, not unit 3. Yes. मैंने syllabus दिया हुआ है in your first ये जो आपका PPT मैंने share किया था group में, उसमें देख लीजिए syllabus है. It is unit 2. Now, while we're talking about segmentation, segmentation means you are addressing to a large audience, very large audience, like 130 crore population को आप address कर रहे हो. So it is bit of difficult, नहीं? It is now bit of difficult to identify 130 crore people, then address them and motivate them to buy the product. It is bit of difficult task. Fine. जैसे कि आप ले लीजिए, आप एक सोप मेकिंग कंपनी में एज एन मार्केटिंग मैनेजर हो, तो आप क्या करोगे? आप सोप बनाए, फिर आप क्या करोगे ना, इसका एंडोर्समेंट करोगे, इसको अट्रैक्ट करोगे लोगों को, टारगेट करोगे लोगों को, या तो फिर आप बेचोगे. सो इट इज बिट ऑफ डिफिकल्ट दैट फॉर वन पर्टिकुलर सोप यू आर एड्रेसिंग 130 करोड़ पॉपुलेशन. इट इज बिट ऑफ डिफिकल्ट. तो उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आता है कि you have to divide the market according to the various kind of basis. अब क्या करोगे? You have to divide the market. Now, how to divide it? Now, the question is how to divide it. Divide on the base of the product utility. Now, for an example, it is a product, जैसे कि whatever examples I have want to give you, that is it is a soap. Now, the question is soap is for a baby, or maybe it's for a female or for a male person. Now came to this soap is based on glycerin. This soap is specifically people will buy because it is enhance your beauty, or maybe it was focuses to the soap is focuses to the exactly it is for a basic Ayurvedic soap. Now the question is what kind of soap you want to sell, or maybe what kind of soap or product you are being manufacturing. Got it? So एक बार ये finalize हो जाए कि आप क्या बेचना चाहते हो, मतलब what kind of product you want to sell to the market. Once it is finalized, then you have to target a particular kind of audience. So उसमें क्या होता है ना, आप segment कर लेते हो. You are segmenting the whole market into some niche homogeneous parts. Niche मतलब छोटा, homogeneous मतलब similar group होना चाहिए. Fine. So you are being identifying people of similar needs, similar groups, and then it will be sold. Fine. This is what called segmentation. Now, what is targeting? Targeting involves the process of evaluating each segment attractiveness and selecting one or more segment to enter. Fine. Target means what? Once I identify this is the soap where I'm making a Ayurvedic soap. My company is manufacturing a Ayurvedic soap. Now my target audiences are those kind of customer who are believe that Ayurvedic soaps are more good for the skin in comparison to any other soap.
if I find out that particular kind of people, then I have to target them. Now, how to target them? Give them attractive, offers, or maybe making a very attractive awareness program, or maybe try to identify the group is very small. So identify with the personal selling, whatever strategy I am adopting, it is up to me according to my budget. So I will try to attract the target audiences to my particular product and try to, enter to the segmentation. Now positioning. Once I target them, then I have to position, or it has to be positioning in arranging a product to occupy a clear, distinctive, and desired place related to, competing products in the mind of the customers or consumers. That means what? Once my attractiveness product or procedure is being over, then what I have to do? I have to position the product in the commercial market in certain way so that people will buy. So मुझे क्या करना है? वो प्रोडक्ट को लाना है, कहीं ऐसे जगह पे पोजीशन करना है प्रोडक्ट को मार्केट में जहां से लोग खरीदेंगे. Fine. So this is what called segmentation, targeting, and positioning. This approach is called STP approach. Okay. Target market means a market is a set of all actual and potential buyers. A target market is a group of people towards whom a firm markets its goods, services, ideas with a strategy designed to satisfy their specific needs and preferences. This is what called target market. Any marketing strategy must include a detailed or specific description of this. Now, what is a target market? Okay, while we're seeing a market, everyone is a buyer. You have to see like this, like Mr. X is a buyer, Mr. Y is a buyer, Mr. Z is a buyer, Mr. A is a buyer. So for me, when I produce a product, everyone is, for me, is a buyer. But the question is, how many out of them have a consumption ability? Got it. So for me, 130 crore population are the buyer of my product, but I have to understood as a seller that how many of them can spend the money to buy my product. Let's talk about a product which is a very highly, luxurious product, which is cost around something like 5 lakhs or 8 lakhs rupees. Any product, maybe it's a equipment, or maybe it's a car, or maybe it's a jewelry, maybe it's a, mobile phone, or maybe anything. Now the question is, if I prepare a product which is highly costly, it's a very luxurious product, then who are the consumers for me? Who are the potential buyers for me? The potential buyers are, very limited group who try to buy a product which is worth rupees 8 lakhs rupees, and it's a jewelry. So for me, these potential buyers are very few, because the people who have ability to pay to buy the product, they are my potential buyers. Otherwise, all are my set of actual buyers. So for all, I will plan a basic advertisement. But while we're talking about who are the buyer, those people who could able to spend it. A target market is a group of people towards whom a market, farm markets its goods, services, ideas with a strategy designed to satisfy their specific needs and performance preferences. It is already been, I told you so many times. Now the question is, what is the requirement of effective, segmentation? Why effective segmentation is required? I told you what you understood by segmentation. Segmentation means, dividing a mass people or mass population into some homogeneous subsets. Now, what do you understand by homogeneous subset? Homogeneous subset means a group of people have a similar kind of need, or similar kind of want, or similar kind of demand. They are the homogeneous subset. Now, while we're talking about how to make an effective segmentation, the effective segmentation can be done by measurably. If you could able to measure it, then accessibility through में, अगर आप चाहो तो accessibility through में segmentation को divide कर सकते हो. Substantial, then differential,
and actionable. So you could able to segment your product according to this particular way. एक minute, I will try to do it. Whenever I try to increase the font size or like स्लाइड को मैं ये करती हूँ ना, आपको फुल स्क्रीन करती हूँ, ये अपने आप कहीं पे चला जाता है. सो आई ट्राई टू डू इट, लेट्स सी. देखिए अब नाउ इट्स ओके. इट्स ओके, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ओके फाइन. So measurably, accessibly, then substantially, differentially, actionably. So these are some of the way to make your segmentation with a easy way. So how to measurably? Measurably means आप जहाँ पे measurement कर सकते हो. So you could able to identify your market according to the size, according to the purchasing ability, according to the profile of the segment. So that can be measured. Size matlab, for an example, I want to sell a product which is like a Rolls Royce car. So for me, size is very small. That is a very small group over in India who could able to purchase the product like Rolls Royce car, because it is quite very expensive. So I know as a product maker, I can understand from Odisha there are only 2 people who could able to buy it because they have the purchasing ability. Or maybe West Bengal there are 7 people who could able to buy it. Or maybe in Delhi there are 25 people who are ability, they are having ability to buy the product. So this is how I could say that according to the product price, I could make us identify a size of the market according to the basing on the purchasing power. So for me, the profile of the segment can be measured with a very similar counting group. Got it? But say if you're talking about a product which are very cost or the product something like a milk powder, to identify how many people really want a milk powder for their basic needs. So how to identify them? Seti measurably will not work. Seti apano kuada asibe na apano asibe substantial. Segment are very large. Now you think about how to make a very good endorsement and attract the people. Seti apano segmentation ko jai parveni, because some people buy the milk powder for their babies. Some people buy the milk powder for the utility of tea. आप टी पीते हो तो उसके लिए खरीदते हैं. So वहां पे आप substantial में जाओगे, measurably में नहीं जाओगे. Then came to accessibility. Segments can be effectively reached and served. So accessibility, one example is how many people can reach to your product. If you are offering a product which is a luxurious product or semi-luxurious product, you are offering, making an advertisement, but at the time when people really looking for your product, you are not able to reach to the market. वो होता है क्या? क्योंकि you are not reaching to the market, what happened? People will go and switch their want to the substitute products. Whatever substitute products are available in the market, they will go to that. So segmentation में क्या होता है? So accessibility is one particular point. आप अगर segment करते हो, if you are segmenting the market according to your product, you have to reach to the product at a time when customers really looking for your product. Then differentially, segments must respond differentially to products, to the different markets or different marketing mix and programs. So whenever you try to make a segment, remember every particular product is different from other product, and every particular marketing strategy is different from other marketing strategy. So whatever marketing strategy you're adapting from RBI, that marketing strategy might be failed in IRDA of India, or that marketing strategy definitely failed when the product is from the SEBI. So similar product, it is an investment product. आप RBI में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इरिडा में भी करते हो, आप सेबी में भी करते हो. But what is the difference between these three? The respond group for RBI are completely different. The respond group for insurance is completely different, and the respond group for the SEBI
और आपका स्टॉक एक्सचेंज आर कंप्लीटली डिफरेंट. आरबीआई में जहाँ पे रिस्पॉन्ड ग्रुप होता है, दोज पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक एनी डिफॉल्ट रिस्क. इरिडा में क्या होता है ना, सब रेस्पॉन्ड ग्रुप होते हैं, क्योंकि दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड अ प्रोडक्ट विच इज केम टू यू आफ्टर योर लाइफ. एंड सेबी में वो लोग जाते हैं जो दोज पीपल हु रियली वांट टू टेक रिस्क. So for everyone, the product are different and product is similar, like investment product, but there are three different categories. So substantially, as a seller, you have to make different strategy. You have to adopt different strategy to make it happen. Then came to actionable. Actionable means effective program can design to attract the customer and serve the segment. So one has to make a very effective programs, so that, or effective program that you have to design to attract the people. Okay. What are the steps that needs to understood for the effective segmentation? If you see this particular diagram, you could able to find out how to identify the market segmentation, targeting, and market positioning. First one, as I have asked you a question that identify the basis of marketing segmentation. So once to identify what is segmentation or marketing segmentation, you have to go by two basic steps. That was identify the basis of the segmenting the market, develop the profile of resulting the segment. So एक है क्या, आप पहले basis देखते हो, on basing of what you have to make a segmentation. Second one, you have to develop a segmentation result. Second one आ गया आपका marketing target और target marketing. So develop selection criteria and select target segmentation. Then positioning आप क्या करोगे, develop positioning for each target segment and developing marketing mix to target the people. So one by one. Now came to what are the levels of marketing segmentation. Fine. Levels of marketing segmentation, that means first one, if the product is very huge, same product to the all customers, like particular जैसे मैंने कहा एक soap ले लीजिए, फिर ये food का product ले लीजिए, फिर और आप एक डेली डे टू डे लाइफ में आप जैसे जो भी product use करते हैं वो ले लीजिए. So same or similar kind of product to all the customer, like a toothpaste or maybe a soap, maybe oil. So here, whatever product you are using, that you could not go for any segmentation. So you have to ask for the mass marketing. You have to ask for the mass marketing. Priya, I will give you this slide on your. I will share this slide in your group. So don't worry. I told you, क्योंकि class तो for a very limited time period. So we'll have to complete your syllabus. So जैसे कि पहला unit खत्म हुआ तो I have already. Yes, Sanjay Mishra, if you are in the group, I already share the first unit. ये क्या होता है ना, यूनिट के बाद ही हम लोग शेयर कर सकते हैं, उससे पहले शेयर करेंगे so it was not any kind of benefit you are getting, right? So don't worry, I told you from the first class, every end of my every unit I will share the slides in your group. So don't worry. Now let's talk about the studies, then we will go to the that portion जहाँ पे मैं slide share करूँगी. Now if the product is a very day-to-day usual product, then it has to be identified with the mass marketing. यहाँ पे आप segmentation apply नहीं कर सकते, like saving deposit, saving account ले लीजिए. So saving account for everyone. You can't say कि Mr. X is will have a ability to pay and open a saving account. Mr. B is not having a ability to open a savings account. No, savings account for all. And nowadays it is very essential where everything is now online or everything is gone through the your account system. That's why it is essential to understand savings account is for the mass marketing. बट वहीं पे ले लीजिए डीमार्ट अकाउंट ये मास मार्केटिंग नहीं है. जो लोग सेबी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो फिर स्टॉक खरीदेंगे, उनके लिए है डीमार्ट अकाउंट. फाइन, करंट अकाउंट इज नॉट
फॉर मास मार्केटिंग करेंट अकाउंट वही लोग खोलेंगे जो लोगों को कोई कंपनी के थ्रू और तो एनी काइंड ऑफ कंपनी के थ्रू आपको कोई भी डील्स करना है, सो वो लोग खरीदेंगे आपका क्या करेंट अकाउंट. गॉट इट. नाउ केम टू द सेकंड लेवल. Now segment marketing, where products are very different to each other, and for that particular different products you have to attract the customers. So here we need some kind of segmentation. Like a toothpaste, very simple is a toothpaste. टूथपेस्ट में आ गया है दो कैटेगरी. यहाँ पे जेंडर का कैटेगरी नहीं होता है. क्या कैटेगरी होता है? दो कैटेगरीज होते हैं. वन इज फॉर बेबीज वेयर द टूथपेस्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द एज ऑफ 1 to 6, then 6 to above. Got it? So there are two categories. So ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं उनका ज्यादा आप सेगमेंटेशन नहीं करवा सकते. Fine, based on not exactly, हाँ, you can say it is based on Subrat जो बोल रहा है. So it is based on your age, but it was not having so much of differentiation. जैसे एज में भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन आते हैं प्रोडक्ट का. सो ऐसे में इसका जो टूथपेस्ट होता है 2 या 3 सेगमेंटेशन में ही आता है. केम टू नाइच मार्केटिंग. नाइच मार्केटिंग क्या हो गया? यहाँ पे एड्रेस ग्रुप इज वेरी ह्यूज बट प्रोडक्ट्स आर आल्सो वेरी ह्यूज इन नंबर. Our products, when products are very huge in number, you could say there are more segmentation based on age, based on gender, based on your age, gender, or maybe it is purchasing ability. जैसे वही आप एक ले लीजिए, एक क्रीम का, एक ब्यूटी क्रीम का ले लीजिए. बच्चों के लिए अलग होता है लोशंस, फिर आता है जेंडर में. पहले एज का हो गया बच्चों के लिए, फिर आ गया यंग अडल्ट्स, फिर आ गया अडल्ट्स, फिर एंटी एजिंग आ गया, सुपर एडल्ट्स, और फॉर एज ऑफ 60 above there are different kind of products which are there in the market. हो गया ये एज में क्या होता है बच्चों के लिए जो बेबी प्रोडक्ट्स. फिर आता है आपका टीनेजर्स, उसके लिए देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देन आता है आपका एडल्ट्स जो उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फिर आता है सुपर एडल्ट्स जिसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फिर आता है तो जो सुपर सीनियर एडल्ट्स होते हैं उनके लिए 60 above, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफरेंट. यहाँ एज का हो गया. फिर आता है जेंडर, जैसे कि बॉयज के लिए कुछ अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है, और फीमेल्स इट इज डिफरेंट. So here we could say that we'll apply a niche marketing concept जहाँ पे आप एक बड़े से ग्रुप को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो. Then you try to sell it in the market. But remember that subgroups must be equal, kind of homogeneous subsets. That means the group must be homogeneous with each other. So then came to micro marketing. Products to suit the taste of individual and locations. So here you could able to say that complete the segmentation. Products to suit the taste and individual location. जैसे कि आप यहाँ पे उड़ीसा में रहते हैं, तो उड़ीसा में क्या होता है ना, आपका फूड कैसा है, what kind of food you are having in Odisha. The little bit spicy, and Odisha food is little bit spicy, and you can see that every particular kind of vegetable we are using. But वहीं पे आप चले जाओ कहाँ पे ना, आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, you could see that their food or kind of food is completely different. वहीं पे आप चले जाओ गुजरात में, वहां पे आप देखो कि घी का कितना यूज होता है. उड़ीसा में लोग घी नहीं खाते इतना ज्यादा. वहीं पे चले जाए राजस्थान पे, वहां पे फूड काफी स्पाइसी होता है. उड़ीसा के लोग वहां जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी. वहीं पे चले जाए कश्मीर में, वहां पे फूड डिफरेंट. एक ही कंट्री है बट फूड जो प्रेफरेंस होता है ना इंडिविजुअल का वो डिफरेंट होता है. तो ये जो माइक्रो मार्केटिंग है ना, इट इज बेस्ड ऑन द डेली प्रोडक्ट्स. जो आप खाने का ले लीजिए, क्लॉथ्स का ले लीजिए, वेरी गुड, क्लॉथ्स का ले लीजिए बाद में, तो आपका क्या होता है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, एक दूसरे का चलता ही नहीं हमारा. सो यहाँ पे आपको कंप्लीट सेगमेंटेशन का लेना पड़ेगा. पहले तो एज, फिर ले लीजिए आपका जेंडर, फिर ले लीजिए आपका ऑक्युपेशन, टेस्ट, इंडिविजुअल लोकेशन. ये सब आपका it all are being included in this particular micro marketing segmentation process. फिर ये माइक्रो मार्केटिंग सेगमेंटेशन हो जाता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है लोकल मार्केटिंग, वन इज इंडिविजुअल मार्केटिंग. नाउ लोकल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन ब्रांड प्रमोशन, लोकल कस्टमर ग्रुप्स, और इंडिविजुअल मार्केटिंग होता है
प्रोडक्ट प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स। लोकल मार्केटिंग में क्या आ गया, जैसे कि कोई आपका ब्रांड ले लीजिए, लोकल ब्रांड ले लीजिए, इट हैज टू बी प्रमोटेड एंड इट इज being sold with a very minimum price in comparison to others. इंडिविजुअल मार्केटिंग मतलब एक एक बंदे का आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो बंदे का क्या चाहिए, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, या तो फिर हाउ टू डिजाइन दैट, सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल मार्केटिंग. Now came to the basis of marketing. These are 4 different bases. On that, basing on this basis, actually we will make marketing. So first base is called based on geographic locations. Second one is based on demographic. Third one is psychographic. And fourth one is behavioral. ये 4 bases ही है segmentation का. Now came to geographic. Geographic मतलब what kind of product you are selling. Selling the product which is a national product, or maybe it is a domestic product. That means you are selling in states or regions or cities. So based on that, you had to design your segmentation, strategy. So if it is a product which is sold in nation, like a product like a shoe of Puma. Puma is a product which is not a national but international product. So what kind of strategy you are adopting to sell Puma products so it will attract the customer? So Puma normally prepare the products which is basically shoe for the sports people. देखिए आप जो Puma का है ना, वो sports के लिए अलग आएगा. अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो वो अलग होगा. अगर आप चलने के लिए मतलब आप सुबह उठ के चलते हैं, Puma का अलग प्रोडक्ट है. So it is identifying with a particular utility of shoes over in Indian market. So it is a national product, and based on the utility of the people, requirement of the people, this particular product is being divided. फिर आता है स्टेट, रिलीजन, सिटी, रीजन एंड सिटी. ये सिमिलर ही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. फाइन. फिर आता है साइको डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक, आई ऑलवेज से डेमोग्राफिक इज कॉल्ड पॉपुलेशन. So population divided on the base of age, it will divided on the base of gender, it will divided amongst the based on family size and life cycle or income. So age में क्या हो गया? I have already told you that some of the product in India, they are on maximum, not some of the product, but maximum of the product in India being categorized with the age and gender. So एज में क्या होता है, आपका मेडिसिन ले लीजिए, एज का आता है. फिर आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, एज का आता है. फिर आपका गवर्नमेंट्स ले लीजिए, एज का आता है. फिर आपका डे टू डे लाइफ में थोड़े से प्रोडक्ट होते हैं जो एज के होते हैं. देन आता है जेंडर का, जो एज में जो डिफरेंशिएशन होता है वो जेंडर में होता है. फॉर मेल इट इज डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फॉर इवन इन, अब हेयर कलर को ले लीजिए, आप जो बाल काला करते हैं ना, हेयर कलर्स, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेंडर. वो मेल और फीमेल के लिए अलग आता है. फाइन. Then came to family size. Family size means what? If the family size is very huge, then people has to buy product which is came along with a very low budget. So आपका family, yes, definitely insurance product also came along with the age. जितना young age में आप insurance करोगे, आपका प्रीमियम कम होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा. जितना adult age में आप करोगे, प्रीमियम ज्यादा होगा and benefit less होगा. That we understood. Then family size को ले लीजिए. If the family size is huge, then purchasing ability fall down. If the family size is less and everyone is earning, then purchasing ability increases. Fine. जैसे देखिए आप यहाँ से चले जाइए, भुवनेश्वर से चले जाइए, Bangalore products are being increased. The product price increased. Why? Bangalore have in Bangalore people have smaller family size along with the high income. So जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, फैमिली साइज अगर छोटा होता है और इनकम ज्यादा होता है, लाइफ साइकिल के हिसाब से यू हैव अ हायर परचेजिंग एबिलिटी. देन साइकोग्राफिक ले लीजिए. साइकोग्राफिक क्या होता है? ये होता है बेसिंग ऑन 3 फैक्टर. वन इज सोशल क्लास, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी. सोशल क्लास मीन्स कहाँ पे आप रुके हुए हो, व्हाट पर्टिकुलर सोशल क्लास को आप बिलोंग्स करते हो. योर सोशल क्लास इज वेरी very high, or maybe your lifestyle is very high. So
what kind of purchasing ability you are showing. आपका सोशल क्लास कहता है जब भी आप जूता पहनो, आप वुडलैंड का पहनो या तो फीमा का पहनो या तो फिर कोई ब्रांड का पहनो, आप नॉन ब्रांडेड नहीं पहनोगे. व्हाई? बिकॉज योर फैमिली और योर फैमिली ग्रुप और मे बी योर सोसाइटी विल से अरे क्या जूता पहना है आपने, अपना ब्रांडेड नहीं पहना, आपने क्या घड़ी पहना है, ब्रांडेड नहीं पहना. सो दैट सोशल क्लास और लाइफ स्टाइल will motivate you to buy the products which are branded products, which are came along with a huge amount of price. So that way, and some people says that एक personality का ले लो, social class का हो गया तो personality का ले लो. Personality का क्या होता है ना, someone some of us like a customer think about if I will buy a branded product, that was increase my personality, that was increase my style, my look. So some people are very biased with the brand and think like this: if I buy a specific brand, then I will look good, look attractive, look very elegant and all. So वो होता है क्या based on, so वो होता है क्या based on social class, lifestyle and personality. So the seller has to catch that. The seller जो sell करते हैं product को, उनको कैच करना पड़ेगा कि बंदे को क्या चाहिए. वो बहुत हाई सोशल क्लास से आया है, लाइफस्टाइल इज वेरी हाई और पर्सनालिटी इज वेरी हाई, देन आई हैव टू सेल देम अ वेरी एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस प्रोडक्ट. देन आता है बेस्ड ऑन बिहेवियरल. बिहेवियरल में क्या होता है ना, ऑक्यूपेशन होता है आपका, बेनिफिट्स होता है, शाउट्स होते हैं, फिर आपका यूजर स्टेटस होता है, यूजर रेट्स होता है, लॉयल्टी होता है. So behavioral, based on behavior, the customers are be divided into different way. So some customers buy with an occasion. If the occasion not came, they will not buy. जैसे कि मिस्टर एक्स को खरीदना है एक मोबाइल फोन, वो क्या है, वो बंदा है occasion based and benefits out customer. So वो क्या करेगा ना, that fellow person has to wait up till the Dashera or maybe Diwali offers are not there. वंस दशहरा और दिवाली ऑफर आ गया, बंदे ने क्या किया ना, मोबाइल फोन खरीदा, क्योंकि वो ओकेजन बेस्ड है एंड बेनिफिट्स आउट बेस्ड कस्टमर है. वो जानता है कि ये वाले जो होते हैं ना एंड ऑफ सीजन सेल या फिर दशहरा या तो फिर दिवाली, वहां पे बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिलेगा. फाइन. सो दैट दीज आर कॉल्ड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में. as for segmentation, this kind of persons are called occasion based buyers or benefits out buyers. User status buyers, those who are came to the market and buy the usual things and with a visual status. वो इतना ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं होंगे और वो ब्रांड के ज्यादा जाएंगे भी नहीं. अच्छा ठीक है, ये मेरे ये आ गया मेरे हाथ में, तो चलो बाय एंड वी विल गो. So these are very regular kind of a buyer. Then loyal buyers. Loyal buyers are those kind of buyer who never change their brand. जैसे कि आप ले लो, आप आप BSNL यूज करते थे फ्रॉम लास्ट 10 years, जब से आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है आपका BSNL है. फिर क्या हो ना, BSNL का रेट, अगर आप ऑफर्स देखिए, ऑफर्स नहीं आता है, BSNL का रेट वेरी हाई है. someone will suggest you that why don't you go for Jio is having so many offers and all, but you are very loyal customers. आपने क्या कहा, आपने मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरा BSNL अच्छा है. अगर आप लेते हो जियो तो वो आप मोबाइल लोगे जिसमें 2 सिम कार्ड यूज करोगे, फिर एक BSNL आपका स्टैटिक रहेगा, सेकेंड में जियो डालोगे, क्योंकि बेनिफिट भी चाहिए, बट आई एम अ वेरी लॉयल कस्टमर. Got it? So this is what the 4 different bases of the marketing segmentation, where you have to identify the customers on the base of national, state level, region wise or cities wise. So किस तरह का product मेरा है and how to sell the product to the different kind of people or different kind of people who are staying in India. Either they are looking for the product with a national product or state, religion, local product, domestic product. So based on that, you make your segmentation. That was the first base of segmentation. Second base में क्या हो गया ना, ये हो गया second base में your population is 130 crore. As
you are a seller of a product, you have to divide this particular population according to the demographic basis. Demographic basis में आता है क्या कि आपने आपके प्रोडक्ट के हिसाब से एज वाइज डिफरेंशिएशन किया, या तो फिर आपने जेंडर वाइज किया, जेंडर मतलब फीमेल में कर दिया, फैमिली साइज को लेके किया, दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्मॉल फैमिली और अ लार्ज फैमिली। अगर स्मॉल फैमिली होता है तो प्रोडक्ट की परचेजिंग एबिलिटी इज हाई, अगर बड़ा लार्ज फैमिली होता है तो परचेजिंग एबिलिटी इज लेस। फिर आता है आपका इनकम लाइफ साइकिल और इनकम, दैट मीन्स दोज पीपल हु आर having a good income, fine, their purchasing ability is high in comparison to others. Those who do not have a good income, their purchasing ability somehow falls down in comparison to others. So ये आता है जितना आप लोगों के उसके लिए ना जो economic policy, one of the major factor of economic policy is to create employability for others, enhance the employability for others and go for full employability. ये होता है economic policy का first rule. So जितना when your income will increase, your purchasing ability also increase. That's why it is very essential that if the demographic population have 100% employability, then definitely it will not only increase the population's it will increase the purchasing ability, and it will move the market in an upward direction, which makes the economic development at a certain rate. Then came to psychographic. Psychographic में क्या होता है? You have to identify what kind of social group. जैसे कि आप ले लो भुवनेश्वर में जो लोग रहते हैं, they know the शहीद नगर area is very very classy area. लोग बोलते हैं ये area है classy area. Classy area means the people who are staying in Shahid Nagar area specifically, they are came along with a very high social group and high lifestyle. So you could able to see that nearby this Shahid Nagar area there are so many malls. Fine, like Pantaloon is there, वो brand factory भी वो वहाँ पे था, अभी बंद हो गया, change हो गया, Jio Mart भी है. So it is nearby, all kind of big showrooms are there. Why? Showrooms or departmental store, because they know that the purchasing ability of this particular area is very high, because area में कौन रह रहे हैं? Very high social group class रह रहे हैं. Fine. सो वहीं पे अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे सोशल ग्रुप और सोशल क्लास, थोड़ा मिडिल क्लास और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहां पे देखेंगे किराना स्टोर्स ज्यादा होंगे. सो किराना स्टोर्स मतलब देयर परचेजिंग एबिलिटी इज लेस, they are most focused on the non-branded products, so kirana stores are there. Got it? So this is called psychographic. Behavioral में क्या आता है ना? behavioral base में आता है you have to identify the people who are occasional buyers. वो कभी कभी खरीदते हो, कोई celebration हो गया खरीदते हैं, so they are very occasionally they try to buy the product. फिर आ गया benefit based, जो लोग वेट करते हैं कब आएगा ऑफर, आएगा कब बेनिफिट आएगा, कब एंड ऑफ सीजन सेल आएगा, तब मैं खरीदूंगी. यूजर स्टेटस, जो यूजुअली खरीदते हैं they will go along with the usual status. And loyal customers, they are very loyal with the product and their services. Fine. So in next class we'll try to cover what is information or marketing information system, marketing research, and the other parts of this particular uh, unit 2. Fine. I will try to unmute you all. Agar, if you have any question, please ask, but one by one, then we'll try to close down the class. Anyone is having any question? Ma'am, please, can you see so the steps in segmentation of segmentation and targeting positioning? STP का जो segment steps है वो वाला थोड़ा slide दिखाएंगे? एक minute, just a minute. Segmentation का जो steps है? Yeah, steps जो slide था. अच्छा, एक minute, I will show it. ये वाला है क्या? Yeah, this one. Please do it full screen.
full screen. Let me do one second. Ma'am, what is niche marketing? Can you please explain? Niche marketing. Niche matlab I'll say with one particular example. While you are selling a product, जैसे कि एक example मैंने दिया था, you are selling a Ayurvedic product or might be it's a Ayurvedic soap. Fine. Niche marketing means when you are substantially divide a huge group on base of your product into some very short customers, for a very short customers. That means your addressing group is very small. So that was called niche marketing. Niche मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में आप डिवाइड करते हो. आपका एक आयुर्वेदिक सोप है, सो आप डिवाइड करते हो, ये सोप है किसके लिए, ना एज ग्रुप ऑफ 15 से 25. फाइन. सो क्या होगा ना, और जेंडर में क्या आता है ना, फीमेल आता है. सो आपके लिए जो प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता है ना, वो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और ग्रुप ऑफ टारगेट ऑडियंस वेरी स्मॉल. पहले तो है जो बंदे ये जो आयुर्वेदिक सोप पे बिलीव करते हैं, फिर आ गया एक फीमेल ही बिलीव करेगा, फिर आ गया एज ग्रुप इज 15 to 25, फिर आ गया इट विल बी आइडेंटिफाइड विथ ओनली वन स्किन इश्यू. अगर आप इस ग्रुप में आते हो तो ही आप खरीदोगे. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट इज प्लान्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ग्रुप. That's why called niche groups, and the marketing which is developed for these short groups, that was called niche marketing. You understood? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Well, anything else? Don't worry, I will share this with you, because I was unaware about this class. मुझे पता नहीं था, मुझे सुबह आज क्लास लेना था. So I have another class on 10 exactly. So 5 मिनट का break लेके I will have to join over there. So if you have any questions, anyone, please ask. Otherwise, I will close down and I'll meet you in the next class. No questions? No, ma'am. ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାଉଛନ୍ତି? मैम एक्चुअली लास्ट क्लास रे आपण जो कहिथिले माइक्रो इंटरनल मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग मैक्रो मार्केटिंग, तो इंटरनल मार्केटिंग जोटा कहिथिले सेतरे आपण रखथिले इंटरनल माइक्रो मार्केटिंग. सेतरे आपनकर कस्टमर इंटरमीडिएरी सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स रहिले. पुणे अगेन स्टेक होल्डर्स रे भी कस्टमर रहिले, इंटरमीडिएरीज रहिले, सप्लायर्स रहिले. सेम टा रहइबो. सुनते इंटरनल. हां, मु कहूची आपण जो क्वेश्चन टा पचछथि कोठी आपनका डाउट अछि, मु कहि दोची. आपनका डाउट हला इंटरनल एंड माइक्रो इंटरनल रे केते गुडा फैक्टर सिमिलर थिले. दैट इज योर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. मु बुझी परली आपनका क्वेश्चन टा. सेठी आपण देखंतु इंटरनल मार्केटिंग और माइक्रो इंटरनल मार्केटिंग रे प्राय आपनकर जो वेरिएशंस कंपोनेंट रहिबे, दैट वाज सिमिलर कंपोनेंट्स. सेम कस्टमर्स रहिबे. माइक्रो इंटरनल मार्केटिंग रो कस्टमर्स रो डिफरेंशिएशन कोन, धर आपनकर इंटरनल मार्केटिंग रो कस्टमर हैला कि ना, जेमति कि लॉयल कस्टमर आपनको जे सब दिन किनुचंदी, कि आपनको बेनिफिट बेस्ड कस्टमर्स जे आपनको बेनिफिट आसिलाटु किनुचंदी. बट सेठी जितरे माइक्रो रे कस्टमर आसिला ना, से कस्टमर जहा को हमें टारगेट करूचो. बुझी पड़चंदी? इंटरनल कस्टमर की ना, जे ऑलरेडी आपनकर जिंस किनुचंदी, तांको पय आपनको बेसी एफर्ट दबा पड़नी. दे आर वेरी कंट्रोल्ड ग्रुप. आपण जदि किछि फीचर्स रे ओ एथरे चेंजेस करूचंदी, से माने अल्टीमेटली किनिबे. बट जेतले आपण माइक्रो मार्केटिंग रो कस्टमर आछचंदी, से माने ले टिके अनकंट्रोल, कारण तांको आपण को अट्रैक्ट करिकि ना आपण को जिंस बिकिबा को पड़िबो. दे आर टारगेट ऑडियंस. ए माने ले यूजुअली आपण को लॉयल कस्टमर्स. सो सेम आछी आपनकर जो अदर फैक्टर्स भी आछुची, जेमति कि आपनकर इंटरमीडिएरीज आसिले. सो से माने प्राय सिमिलर ही रहिबे. इंटरनल मार्केटिंग एंड माइक्रो इंटरनल आर वेरी सिमिलर कंपोनेंट्स, कोडका सिमिलर ही रहिबो.
अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट भी माने सेम आसी माइक्रो इंटरनल Same माइक्रो आसीबो। एनवायरनमेंट सहित Yes, ତା ସହିତ ସେମ୍ ହିଁ ଆସିବ। କେବଳ ମାକ୍ରୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ और कंट्रोल्ड बाहर आସୁଛି। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। No, ma'am. वेलकम। ओके, जोटी बुझी परिबेनी हेलो मते हेलो मैम। कहिबे एंड डोंट हेलो वरी। मैम। आपनकर जो फर्स्ट डे रो क्वेश्चन थिला कि क्वेश्चन विथ आंसर, जेतले मु मोर हैंड आउट नोट्स गुडा को देबी, आपण जानि परिबे क्वेश्चन विथ आंसर गुडा सेतिर अछि। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. थैंक Thank you. यू, थैंक यू। एंड संध्या बेला क्लास as if जेमती हबो शेड्यूल वाइज, और जी जदि सुजीत सर किछि चेंजेस करछन्ती, वी विल डेफिनेटली प्लेस इट एट योर ग्रुप। हेलो हेलो मैम। हेलो हां कोंतु, हेलो हां कोंतु हाँ मु मुझे सुनु। डिफरेंशियल इफेक्टिव सेगमेंट रे जो डिफरेंशियल स्टेप टा अपन कहले सेटा टिके एलाबोरेट करी कहबी। अबिका मोर एक्चुअली 10 टा रे आ गोटे क्लास अछि, मु नेक्स्ट क्लास रे कहले चलिबो। इट इज गोटे मिनिट मैम। खाली अच्छा डिफरेंशियल टा अपन कहथिले जे सेगमेंट मस्ट बी रेस्पोंड डिफरेंशियली टू डिफरेंट अपन आरबीआई और एसबीआई अच्छा सेबेरा अच्छा, देथिले ସେଇଟା जो डिफरेंशियल मु मेथड कहथिली। हां कोन आपण क्वेश्चन हाँ टा आज्ञा पचार आज्ञा दियौ, जल्दी जल्दी मु से कहि देबी आपनको। हाँ मु सेटा टिके कहि दियंतु कारण बुझी पालेन जे प्रोडक्ट एक्चुअली डिफरेंट कंपनी रो सेम प्रोडक्ट रो डिफरेंशियल मार्केटिंग कहउचंदी अच्छा मु कहूची, ना कोन डिफरेंशियल मार्केटिंग मीन्स आपनकर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। हमें कहूची गोटे प्रोडक्ट रा मु एग्जांपल देली जे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आज्ञा ठीक है, सुनी दियंतु जल्दी जल्दी। जेदी मु कहबी गोटे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, नाउ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कितने प्रकार रो? साइंस मु तार तीनटा एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ा ହେଇଛି बोल करिवु। प्लीज हां नुआ चैप्टर स्टार्ट ହେଇଛି साइंस रा। काइंडली म्यूट। तार କିଛି क्वेश्चन आंसर सुना करानी नुआ चैप्टर। Kindly mute. So when we're talking about a similar product, similar kind of product कहंतु कि similar product कहंतु, जेमति कि कहूची investment product। Differential marketing कोन गोटे particular investment product, but there are three different type of products. One is product is came from RBI, जोटार कोनोसी प्रकार डिफॉल्ट रिस्क नहीं, आपण बिंदास तादरे आपण इन्वेस्टमेंट करूचंदी। One product which is came from IRDA of India. We know that IRDA of India have a always it is came along with a very longer time period of investment, and it is not exactly came along with a huge profit, but it is something where we always try to make a insurance because it will give you benefit after your life. आज्ञा One माने more, मु पचारतल जे हाँ हाँ आउ माने गोटे सेम मोर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट सुनी दियंतु। आउ गोटे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हला कोन ना, जोटा आपण शेयर रे इन्वेस्टमेंट करचंदी। शेयर प्रोडक्ट्स रो स्पेशलिटी हला कोन कि एटा सेही रेस्पोंड ग्रुप ही करूचंदी, दोज हु आर टेकिंग हाई रिस्क। ता माने कोन, फर्स्ट हला रिस्क फ्री, सेकंड हला बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड पई आपण रखुचंदी, जोटी आपण जानचंदी कि इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड मे बी रिटर्न इज नॉट as similar to that. And third हला कोन ना, गोटे particular product, it is also investment product, but एटा हला गोटे risky product. So for every particular kind of product, respond group are different, customers are different, target audience are different, but the product is similar. That was called your investment product. कोंतु हाँ मु सेटा पचारते अपन एटा इन्वेस्टमेंट एग्जांपल देले सपोज हम ब्यूटी क्रीम नो एग्जांपल नबा तो सपोज कोतार नेबे डिफरेंट ब्यूटी क्रीम रो सपोज फेयरनेस क्रीम रो हम एग्जांपल नेले तो फेयरनेस क्रीम प्रोडक्ट जोटा अछि सेटा डिफरेंट कंपनी सपोज आईटीसी अछि, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर अछि, हिंदुस्तान यूनिलीवर अछि, समस्त ब्यूटी क्रीम बाहर करछन्दी। तो से जगह रे हमें ये डिफरेंशियल टा को यूज करबा की माने सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट कंपनी अछि हाँ नहीं से परिवे जगह रे सुनंतु, सेठी आपनका स्ट्रेटजी टा टिके डिफरेंट हबो। आपण जदी सेल करिया चाहउचंदी गोटे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक अ फेयरनेस प्रोडक्ट, सेठी आपण देखंतु बहुत कम आपनका फेयर एंड लवली नहीं जानतो, फेयर एंड लवली रो बहुत कम प्राइस रो प्रोडक्ट भी आछी, गोटे ह्यूज माने प्राइस एटा रो प्रोडक्ट बेसिकली आछी। यूएसपी रहइबो, यूनिक सेलिंग प्राइस रहइबो जोटा कि आपन प्रोडक्ट को मार्केट थारु डिफरेंट करिवो सेटा तो नहीं आज्ञा, यूनिक सेलिंग पॉइंट हला कोन, यूनिक सेलिंग प्राइस तो न थाई बदे, यूनिक सेलिंग पॉइंट थाई। पॉइंट यूनिक पॉइंट सेलिंग पॉइंट हला कोन ना, को थ्रू रे आपण कस्टमर को अट्रैक्ट करूचंदी, केते अट्रैक्ट करि परचंदी, आ केते नंबर ऑफ size of the population, size of the customer will decide the USP of a product.
ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ ଆଜ୍ଞା। ବଢିବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସପି ବଢିବ, ଯେତେ ସାଇଜ ଛୋଟ ହବ ୟୁଏସପି ଛୋଟ ହବ। ଏଇଟା ତା ସହିତ ଠିକ ଅଛି। ମେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା। So we'll talk anything else in the next class. Okay, thank you. And Okay, ma'am. Thank you, ma'am.